हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो आज अपने पास आई है Hyundai Venue 1.0 Turbo and this one's got GDI, same engine as Hyundai i20. So this is the new series. You can see there's a turbocharger right over there. So originally it produces 120 horses along with 172 Newton meters of torque. So this one's got a different sort of ECU and to be honest, I've never worked on this ECU before. It's a Cafico ECU and but not a problem for me. You can see it's a beautiful piece of machinery and we got MRF tires and this is the top end variant with the sunroof and you can see there's a beautiful turbo logo and SX Petrol 1.0 and आज इसका हम करने वाले हैं stage 1 plus remap. Like we are going to put it जितना भी हम इसका like expected है इसके अंदर 20 horses along with 58 Newton meters of torque. So final values will be 140 horsepower along with 230 Nm of torque. तो ये ECU लगा हुआ है इसके अंदर Cafico का. So I have done the pin out and we're gonna begin with the flash. Okay, so here we go. We got Venue 1.0 Turbo stage 1 plus. We have also deleted the oxygen sensor for the catalytic converter. क्योंकि क्या है ना, ये कभी कभी बाद में ये ना लेटर स्टेडीज पे इंटरफियर करता है, तो वो भी मैंने डिसेबल कर दिया इसका ऑक्सीजन सेंसर जो नीचे वाला होता है. ठीक है, बैंक 2 नॉट द बैंक 1. सो यू कैन सी इट्स राइटिंग प्रीटी फास्ट एंड एवरीथिंग. कोई इसका ECM वगैरह एम फिट लगे या ऐसी काम हो जाता है. ठीक है ना, OBD से भी हो जाता है इसका, लेकिन OBD अभी इसका प्रोटोकॉल सेफ नहीं है. ठीक है ना, बीच में क्या है ना, कभी कभी ये सप्लाई कट ऑफ कर देता है तो बीच में काम अटक जाता है. सो इट्स ऑलवेज गुड आइडिया टू डू इट वाया सर्विस मोड. ठीक है, so we call this bench mode, basically bench tune, and there is OBD tune and there's boot tune. So we are doing bench tune on this and we're almost done. Wow, that was pretty fast. तो इसकी होने वाली है 140 हॉर्स पावर along with 230 Nm of torque basically इसमें. और Hyundai N8 जो i20 है, बार बार i10 निकल रहा है. कैपा इंजन है दोनों. ठीक है, एंड दोनों में सेम इंजन लगा रहेगा. ठीक है, एंड सेम ECM है उसके में भी, i20 में भी. ठीक है, तो अभी चलते हैं इसको लेके. इट इज़ डन. तो अभी ऑपरेशन अपना हो चुका है. ECU हैज़ बीन रिटन सक्सेसफुली एंड वी आर गोइंग टू डिस्कनेक्ट. और चलते हैं इसको रोड पे लेके अभी. 140 हॉर्सेज अलॉन्ग विद 230 Nm ऑफ टॉर्क. Alone in my despair.